In this video, I'll discuss the sentence, the kinds of sentences, and subject and predicate. And it is followed by one exercise to test how far you've understood. Well, what do you mean by sentence? A sentence is the one which you speak or write. And when we speak or write, we usually use some words. We generally use these words in groups. Look at the example. John sat in a corner. In this sentence, you will see a group of words arranged together to make a complete sense, to give a meaning. So what is a sentence? A sentence is a group of words like this which makes a complete sense. So this is what is sentence. Now we'll look at the kinds of sentences. When the sentence that make statements or assertions, we call it assertive or declarative sentence. Second, the sentence that asks questions, we call it an interrogative sentence. And third, a sentence that expresses a command or make a request is called an imperative sentence. Four, a sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. So this is how you have kinds of sentences. Okay? So एक जो सकारात्मक होता है जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं, दूसरा प्रश्नवाचक होता है जिसमें हम सवाल पूछते हैं, और तीसरा जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम आदेश करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें हम अपने स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस के उदाहरण में हम देख सकते हैं, जैसे ऑलरेडी हमने जो सेंटेंस उदाहरण में लिया था जब हम सेंटेंस के बारे में समझा, जॉन सैट इन अ कॉर्नर is an example of an assertive sentence. This is an assertive sentence or a declarative sentence. Okay. Now we look at one interrogative sentence example. Where do you live? ये एक interrogative sentence है, और यहाँ पे ध्यान दीजिए the punctuation. The sentence ends with a question mark. So it is an interrogative sentence. How does the imperative sentence looks like? Let's take an example. Have mercy on us. Be quiet. जो sentences आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो और जो मैं पढ़ा हूं, be quiet, have mercy on us, be quiet, ये एक आदेशात्मक सेंटेंस है. have mercy on us ये एक रिक्वेस्ट है. तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को क्या कहेंगे? ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि इसमें आदेश है या फिर विनती है, अनुरोध है. एक और सेंटेंस हम देख लेते हैं. हाउ वेरी कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ शेम. ये सेंटेंस को आप किस श्रेणी में आप रखोगे? Yes, it is an exclamatory sentence, okay? Because it expresses strong feeling. How very cold the night is. ये आपकी फीलिंग को बताती है, ठीक है? क्योंकि नाइट में कितनी ठंड है, तो ये आप एक्सप्रेस कर रहे हो. Because maybe you are shivering, so you're expressing your feeling. What a shame. आप किसी बात पर बहुत ही शर्मिंदा हैं, तो आप कह रहे हैं what a shame. It is an expression of your strong emotion, strong feeling. So it is the example of an exclamatory sentence. One thing you must remember, sentence should either closes with a full stop, question mark, or an exclamatory mark. एक बात को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है. सेंटेंस को जब आप एंड करते हो तब या तो आप एक फुल स्टॉप यूज करो, या question mark, या फिर exclamatory mark. When you use full stop, you use full stop for assertive or declarative sentence, for negative sentence, and for imperative sentence. Okay? Assertive या declarative sentence, imperative sentence के end में आप full stop use करोगे. Interrogative sentence में it's quite clear, आप question mark use करोगे. Right? और exclamatory sentence में आप exclamatory mark use करोगे. ठीक है? Now let's look at subject and predicate. This is not a new topic, right? You must be knowing about it. You must have heard about it right from the very beginning
when you started learning English. Anyway, a sentence can be broadly divided into two parts. Okay? One part is called subject and the other part is called predicate. Let me explain what do I mean by this. The part which names the person or thing we are speaking about is called subject of the sentence, and the part which tells something about the subject is called the predicate of the sentence. तो सब्जेक्ट हम किसे कहेंगे? सब्जेक्ट हम सेंटेंस के उस भाग को कहेंगे जहां पे एक व्यक्ति या वस्तु कर्ता के रूप में है, ठीक है? और प्रेडिकेट हम उस भाग को कहेंगे जिस भाग में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता हो, ठीक है? सो प्रेडिकेट talks about the subject, and subject plays the important role. Usually, subject comes first in the sentence, but in some occasion, the predicate is put first in the sentence. For example, sweet are the uses of adversity. Down went the Royal George. सेंटेंस के पहले भाग में यूजुअली सब्जेक्ट को पाया जाता है और प्रेडिकेट उसके बाद आता है, लेकिन कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि सब्जेक्ट बाद में आता है और प्रेडिकेट उसके पहले आ जाता है, जो उदाहरण अभी हमने आपको दिखाया। ऐसे सेंटेंसेस को हम इन्वर्टेड सेंटेंस कहते हैं जहां पे प्रेडिकेट सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। प्रोबेबली व्हेन वी स्ट्रेस अपॉन द प्रेडिकेट मोर देन द सब्जेक्ट, जहां पे हम प्रेडिकेट के बारे में ज़्यादा ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे, तब ऐसे जगह पे क्या है, हम प्रेडिकेट को प्रथम स्थान देते हैं और सब्जेक्ट को उसके बाद हम स्थान देते हैं, ठीक है? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट। फॉर एग्जाम्पल सिट डाउन, यहाँ पे जो मैंने ये उदाहरण यूज किया, द एग्जाम्पल दैट आई हैव यूज्ड सिट डाउन, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक्चुअली यू है, यू सिट डाउन, परंतु मैं यहाँ पे यू यूज नहीं किया और यहाँ पे मैं उसको इग्नोर कर दिया हूं क्योंकि दैट इज अंडरस्टूड, ठीक है? सो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को नहीं पाते, हम सीधे सीधे प्रेडिकेट को ही लिख देते हैं या बोलते हैं, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. So student, I hope you have understood the meaning of sentence, the types of sentences, and subject and predicate. So let me put up some 10 questions on the screen. I'll also display the answer and you assess yourself and see your score.